Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to learn about your subject social science of standard 6, chapter number 12, understanding the map. We have discussed about the explanation part in the previous session, and in today's session, you are going to learn about the exercise part of the chapter. Let's start with the first one, that is choose the correct option. First question: with the help of what can we reach any place in the world on our own? Options: A. GSP, B. ABC, C. GPS, or D. UPS. So correct answer is C. GPS. That is Global Positioning System. Now next one. Which is the English synonym for the word Naksha? Option A. Map, B. Cap, C. Mup, or D. Pass. So correct answer is option A. Map. Hindi is the other word or of this map. Getting it? We have discussed about this point in the explanation part. Now next one, third. Which of the following is not a component of a map? A. Scale, B. Location, C. Conventional sign, or D. Direction. So correct answer is option B. Location. क्यों? लोकेशन किस में आता है? GPS में. Fourth one, by which name is the southeast direction also known? Options A. Nairutya, B. Ishan, C. Vavya, or D. Agnya. So correct answer is option D. Agnya. Now next one, question number 5. Which color is used to show water bodies in a colored map? Options A. Blue, B. Red, C. Yellow, or D. Green. So correct answer is option A. Blue. Now next one, fill in the blanks. In that first one, Mappa Mundi is a word of dash language. Answer is Latin. Next one, there are dash main components of map. Answer is 3. Dash detail are shown in the cultural map. Answer is main made. Okay, so these are easy FIB, so you can easily understood if you have paid attention in the explanation part. Now true or false, and if the statement is false, then you have to give the correct statement for it. First one, oceans are shown in the cultural map. Answer is false. And true statement, man-made features are shown in cultural map. Okay, now second one, vegetation region is shown with the green color in the map. Answer is true. Next, third one, India lies in the northwest hemisphere of the earth. Answer is false. True statement, India lies in the northeast hemisphere of the earth. Getting it? If you have paid attention in the explanation part where I have said you that in the map. Okay, so you can easily answer all these questions. Fourth one, the map showing different continents is a large scale map. Answer is false. The map showing different continents is a political map. Okay, now match the following. You have section A, B, and answer.
First one, this sign shows what? The scale. Okay. Next one, PO. Full form of PO is post office. This all things are used in map. Okay. So these are different signs. Next one, that is third. This sign shows about the north direction. Fourth one, this sign shows about the international boundary. And lastly, this sign shows about the river. Okay. Now answer the following questions. And that first question, write about the types of thematic maps. Answer, these maps are prepared according to the requirement of necessary details. There are two major types of thematic maps. Which are they? First one, physical map, and second is cultural map. Okay. Second question, what is mean by conventional signs? Answer, conventional signs are used in a map to show different physical and cultural details. Like this one, this is an example. Such symbols are called conventional symbols. Getting it? Now next one, third. How many union territories are there in India? Answer, there are 7 union territories in India. This is a basic general knowledge question which you have been studied from basic class. Now question number 4. Differentiate between scale based, that is physical maps, and cultural maps. Answer, following are the major difference between scale and cultural map. Scale based maps, natural elements are shown in scale based map. Okay, जो natural elements है वही चीज कहाँ पे दिखाते हैं? स्केल बेस मैप में. और कल्चरल मैप में क्या दिखाते हैं? मेन में डिटेल्स आर आउटलाइन, और कल्चरल मैप में जो मेन में डिटेल्स है वो कल्चरल मैप में दिखाते हैं. ये मेजर डिफरेंस है, यू शुड रिमेंबर दिस. In these maps, the physical landscape of world like mountains, plateaus, etc. are shown. अब जाहिर सी बात है, जब नेचुरल एलिमेंट आ गया तो जो नेचुरली चीज होती है वही यहाँ पे डिस्कशन होगा. तो यही उसका एक एग्जांपल है. इन दिस मैप फिजिकल लैंडस्केप लाइक माउंटेन, रिवर एंड एक्सेट्रा थिंग्स आर शोन. एंड इन कल्चरल मैप द ह्यूमन एक्टिविटीज आर आउटलाइन इन सच मैप्स. ओके. नाउ next one, mention the types of maps on the basis of scale. Give 2 examples of small scale maps. Answer, maps are into 2 types as follows based on scales. First is thematic map, second is scale based map. So what is thematic map? In this map, large area of the earth is shown in limited area. ठीक है. थीमेटिक मैप क्या है कि अर्थ का जो भी लार्ज एरिया है, अर्थ का, पूरी अर्थ का, वो एक लिमिटेड एरिया, मतलब एक पीस ऑफ पेपर में बताते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप. और स्केल बेस्ड मैप क्या होगा? इट रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल बेस्ड मैप, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्केल के एक्चुअल में मतलब क्या होता है. तो स्केल बेस्ड मैप मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक्चुअल जो डिस्टेंस आप कवर करते हो वो एक स्केल बेस पे वहां पे फिक्स करते हैं. गेटिंग इट? 2 illustrations of thematic maps are atlas map and wall maps. तो ये 2 एग्जाम्पल्स है थीमेटिक मैप्स के. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, write about the main component of map as well as about its scale. Answer, there are 3 main components of map. Which are they? First one, direction, second, scale, and third one is conventional signs. We have discussed about this point. This was the last point of the session.
ओके, मतलब इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो व्हाट इज स्केल? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस. ठीक है, तो स्केल क्या है? स्केल एक ऐसा रेशियो है जो डिस्टेंस बताता है दो पॉइंट के बीच में ऑन द मैप. ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको आगे बता देता हूँ. और वही चीज़ एक्चुअल डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से लेके दो पॉइंट के बीच में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. पता चला? एक एग्जाम्पल आगे दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा. द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू actual distance of 100 kilometer on the earth surface. Let's learn this point with this example. अब समझ लो ये दो पॉइंट है A एंड B. गेटिंग इट? A ले लो सूरत, B ले लो अहमदाबाद फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब A है जो ज़ीरो है, जो आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. मतलब सूरत से आप स्टार्ट करते हो और अहमदाबाद जाओगे तो उसमें आपको फॉर एन एग्जाम्पल अगर 100 किलोमीटर लगते हैं तो आपने यहाँ लिख दिया 0 to 100. अब ये जो बीच में डिस्टेंस है 0 to 100 उसको हम मैप में क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर. अब हम 100 किलोमीटर तो इतना बड़ा तो हम उसमें कर नहीं पाएंगे. ये चीज़ चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, अब एक्चुअल में हम जो 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे वो मैप में 1 सेंटीमीटर होगा. ये किससे होता है? ये जो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट दिख रहा है, जो ड्राइंग या फिर आप बोल सकते हो स्केल, इसी से आपको जो डिस्टेंस है वो पता चलेगा. ठीक है, पता चला एग्जाम्पल से. In the scale above, A is written on 0 and 100 is written on B. There is a distance of 1 centimeter between A and B on the map. ठीक है, वही चीज़ समझाई मैंने. On the basis of the scale, it can be said the distance of 1 centimeter in the map is equal to actual distance of 100 kilometer between the same two places on land. सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ये जो 1 सेंटीमीटर है जो 100 किलोमीटर है, एक्चुअल डिस्टेंस जो लैंड अगर कवर करता है तो उसके अंदर मैप का 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 किलोमीटर. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल. अब नॉर्मल आप देखते हो व्हेन यू आर यूजिंग, सो इन द क्लास यू यूज स्केल फॉर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन और फॉर टेकिंग द एरिया, to know the area. Okay, sometimes it is happening from 1 centimeter to 2, 3, like that. Same name is given to this thing, that is scale, and which is used to know the distance covered on the earth's surface. Okay, so this was the end of today's session. I hope you have understand, and thanks for paying attention. We will meet soon in the next session. Till that, stay home, stay safe, and do your work regularly.